Last video we have seen the concept of cross multiplication method. I will solve now again the two example based on that same method. So first example is x minus 3y minus 7 equal to 0 and 3x minus 3y minus 15 equal to 0. So these are the pair of linear equations. So first of all check whether these equations are there in a standard form or not. So equations are there in a standard form. So now I will solve here first question. So I will write here on comparing given equations with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, we get here the value of a1 equal to, अगर फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करते तो a1 equal to 1, b1 equal to, again here now check properly, -3 and c1 equal to what, -7, whereas value of a2 equal to 3, b2 equal to again -3 and c2 equal to -15. So now I will write using which method? Cross multiplication. Using cross multiplication method. Using cross multiplication method, this will get like x and upon x what we have to do? x के लिए क्या कर रहा है तो a1 और a2 वैल्यू स्किप करना है, b1 b2 c1 c2 लेना है. So that will get -3 -7 and -15. So in determinant you have to write -3 -7 -15. For y we have to skip second column. y के लिए क्या करना है, सेकंड कॉलम को स्किप करना है, फर्स्ट और थर्ड लेना है. y के लिए फर्स्ट और थर्ड. So that will get 1 3 -7 -15 and for last 1 के लिए क्या करना है. So for 1 we have to skip third column and we have to take first and second. So that will get 1 3 -3. So now I told you in the last video also, while multiplying this we have to start from the first value. For x and last. For first and last we have to multiply. We have to start from the first value and we have to multiply that, like cross multiplication we have to do here. Cross multiplication, here also cross multiplication and here also cross multiplication. So I will write here, start from here, that is a, but I will put in a bracket. First step में multiply नहीं करना है. -3 into -15. See here I have not multiplied here. -3 into -15 as it is. Here minus sign, this is a dot, it means multiplication. इन दोनों के बीच में multiplication है, यहाँ पे minus sign and -3 into -7, that is a -3 into -7. Okay, I will put here x upon -3 into -15 minus -3 into -7 is equal to, here also for y के लिए मैं कैसे लिखूंगा, 1 into 1 dot means what, into 1 into -15 middle sign minus 3 into -7, 3 into -7 and at the last, sorry, here 1 into -15 we have taken. So sorry, we have to take here first we have for y we have to start from here. y के लिए हमें क्या करना है, सेकंड वैल्यू से स्टार्ट करना है. सो यहाँ पे मिस्टेक चेक करनी है प्रॉपरली. So that we have to write here 3 into -7 first and then 1 into -15. So check it properly. For y only we have to start from here. For 1 again 1 into -3 minus sign 3 into -3 like this. So check for y properly because this is only the confusing point, otherwise remaining method will be simple one. So here I will solve now this. Here x upon here what we get, 15 3s are
minus minus plus 15 3 za, that we get 45. Here now this minus minus and again minus 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 plus and again this minus, it means this will get minus 7 3 za what, 21 is equal to y upon 3 into 7 minus 21. Here minus minus will get plus 15 1 za 15, and at the last 1 upon 3 into minus 1 minus 3 into 1 minus 3 into minus 3 plus 9 plus 9. So at the last what we get, x upon, here if we subtract 21 from 45, 21 को 45 में से subtract करते, what we get here, here we will get here 4 and 2, that is x upon 24 is equal to y upon, here if we subtract 15 from 21 we will get minus 6, and that is equal to 1 upon, if we subtract 3 from 9, so we will get here 6, and sign of larger number, here also sign of larger number minus, that's why minus, sign of larger number, that is a 45 plus, and here also plus. So now here again I will give here name as first, second or third. So I will write directly for x, x के लिए क्या करना है, तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करना है. So I will write here x upon 24 is equal to 1 upon 6. So if we solve this, what we get here, 6 into x, और डायरेक्टली आई विल टेक 24 here, 24 को मैं इधर लेता हूँ, 6 को एज इट इज रखता हूँ. सो दिस विल गेट, आई विल राइट हियर ओनली x इक्वल टू 24 upon 6. So that will get 6 1 za, 6 4 za. It means we will get here x equal to 4. Now for y what we get here, अगेन फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड. y के लिए क्या करना है, सेकंड और थर्ड, क्योंकि मुझे y फाइंड करना है ना, तो y के लिए y जहाँ पे वो लेना है और 1 की वैल्यू लेना है, 1 जिस कॉलम में वो y, बिकॉज हियर ओनली नंबर्स आर देयर, हियर वेरिएबल इज देयर, वी कैन सॉल्व इट इजीली. सो विल गेट हियर y अपॉन minus 6 is equal to 1 upon 6. This minus 6 I will take in the numerator, that will get y equal to minus 6 upon 6, and that gives minus 1. So it means y equal to minus 1. So we'll get here answer as x equal to 4 and y equal to minus 1. So check it properly and try to solve this example by your own. Check whether you are getting this answer or not. I will solve my second example. Second example is there like 3x plus 4y is equal to 10. 3x plus 4y is equal to 10, and 2x minus 2y equal to 2. 2x minus 2y is equal to 2. 2x minus y is equal to 2. Now again, first of all we have write the equation in standard form. So I will write here 3x plus 4y. Here now if we take 10 toward left hand side, so we will get here minus 10 equal to 0. This is equation number first. Second, 2x minus 2y. Now here we will get minus 2 is equal to 0. Equation number second. क्या क्या मैंने यहाँ पे 10 और 2 को लेफ्ट साइड में लेके आया, लिया मैंने यहाँ पे. Why? Because we have tried the equation in a standard form. Now here I will write on comparing with, I will write in short, on comparing with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ इनके साथ, तो what we get here a1 is equal to 3, b1 is equal to 4 and c1 is equal to minus 10. Now again, what is the value of a2 here? a2 equal to 2, b2 equal to minus 2 and c2 equal to minus 2. See here a1 3,
B1 4, C1 minus 10, A2 2, B2 minus 2, and C2 also minus 2. As here minus signs are there, that's why we have to write these numbers with minus sign. So now I will write using which method? Cross multiplication मेथड x के नीचे क्या आएगा अभी ना, x के लिए क्या करना है, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट को स्किप करना है. वाई? बिकॉज x के जो कोएफिशिएंट है वो 3 and 2 है, 3 and 2 x के कोएफिशिएंट है, इसलिए उनको छोड़ के रिमेनिंग 2 को लेना है. दैट्स व्हाई आई विल टेक 4 minus 2 minus 10 minus 2. दैट इज 4 minus 2 minus 10 minus 2. फॉर y व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू टेक, y के लिए सेकंड जो है वैल्यूज उसको स्किप करना है और फर्स्ट और थर्ड को लेना है. सेकंड को स्किप करना है, फर्स्ट और थर्ड को लेना है. सो आई विल राइट हियर 3 2 minus 10 minus 2, 3 2 minus 10 minus 2. एंड फॉर थर्ड, फॉर वैल्यू डिनोमिनेटर ऑफ 1, थर्ड को स्किप करना है, फर्स्ट और सेकंड के लेना है, फर्स्ट और सेकंड के लेना है. 3 2, that is 3 2 4 and minus 2. So now here once we have written in this way, so what we have to do, we have to write the multiplication properly. तो x के नीचे अभी मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो x के नीचे स्टार्ट तो यहाँ से करना है for x and for last start from here. Keep remember properly. So I will write here in the first step I will write multiplying as it is 4 into minus 2 minus sign minus 2 into minus 10, so minus 2 and minus 10. See here मैं -2 और -10 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ स्टेप में, बट मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया. वाई? बिकॉज टू अवॉइड द कंफ्यूजन विल मल्टीप्लाई इन द नेक्स्ट स्टेप, सो दैट विल गेट द परफेक्ट आंसर. इज इक्वल टू नाउ y के लिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा. नाउ फॉर y, सी हियर फॉर y वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. y के लिए हमें क्या करना है, सीक्वेंस चेंज करना है. तो ये ध्यान देखना. इन द लास्ट एग्जांपल से हियर हमने थोड़ी मिस्टेक की थी वहाँ पे, तो प्रॉपर वैसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. So keep it properly. First and third के लिए start from here. For y only we have to change the sequence. So here I will write 2 into minus 10, 2 into minus 10. Again यहाँ पे क्या किया मैंने, तो कुछ भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन I am doing here. That is 2 into minus 10 minus sign 3 into minus 2. तो यहाँ पे मैंने अगर 3 into minus 2 के जगह पे अगर minus 2 into 3 लिखा तो भी करेक्ट आंसर आ सकता है, बट स्टार्टिंग जो है वो प्रॉपरली करनी है. अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन के लिए वैल्यू चेंज हुई तो चलता है, सीक्वेंस चेंज हुआ तो चलेगा. लाइक 3 into minus 2, 3 into minus 2 या minus 2 into 3 ये लिखा तो चलता है, बट फॉर अवॉइडिंग द कंफ्यूजन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली. 3 into minus 2 minus sign 2 into 4. So now you can do the multiplication here. 4 to the minus 8. Here minus 3 times minus is there. That's why in answer we'll write minus sign. 2 10 the 20. Y upon 2 into minus 10 again minus 20. Minus 3 into minus plus multiplication 3 to the 6 is equal to 1 upon 3 to the here minus 6 and 4 to the minus 8. Now at the last I will write here x upon 2 into minus 20 into minus 8 will get minus 28 is equal to y upon here minus 20 into 6 minus 20 plus 6 sorry minus 20 plus 6 will get here minus 14 and is equal to 1 upon minus 6 and minus 8 minus 14. Now what we have to do in the next step, first column, second column, third column. So I will write here for x x के लिए क्या करना है, तो फर्स्ट और थर्ड को लेना है, बिकॉज इसमें x है और इसमें 1 की वैल्यू है. सो आई विल राइट हियर x upon minus 28 is equal to 1 upon minus 14. So what we get here, x equal to, only just shift this minus 28 here. So I will take here minus 28 upon minus 14. Again now minus and get cancel. 14 ones are 14, 14 to the
28. So that gives x equal to 2. Now for y, I will write from second and third. That is a y upon minus 14 is equal to 1 upon again minus 14. So it means y equal to minus 14 upon minus 14, minus sign get cancel, 14 1s are 14, 14 1s are 14, that gives 1. So it gives y equal to 1. So now if you want, then at the last properly write down x equal to 2 comma y equal to 1 is the required solution. So now in this way try to solve the examples. See here, most of the word problem, whatever that are remain, that I will take afterwards. Just you first solve the examples using these 3 methods. Try to solve the examples, minimum 10 examples from all the 3 different methods, and check whether by each method you are getting the same answer or not. 10 examples using all the 3 methods, that is substitution also, elimination also, and cross multiplication also.